ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बैंकिंग के। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं पार्ट 2 के, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। और ये जो पेपर है वो बैंकिंग का है। ठीक हो गया। फॉर आईकॉम पार्ट 2 रिटर्न भी है, आप देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट डेवलपमेंट बैंक्स? राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस। Briefly explain 2 methods of using currency notes. Write any 4 factors that affect cash reserve. Describe any 4 limitations of credit creation. What is procedure of converting a non-scheduled bank into a scheduled bank? List any 4 qualities of a good security. Write any 4 advantages for the government of opening bank account. What are 4 elements of check? What is an overdraft? What do you know about the inland bill of exchange? Write any 4 factors affecting cash reserve ratio. What is journal crossing? What is bill of landing? What is promissory note? Define secured and unsecured loans. Define credit creation process. इसके बाद बच्चों आपके पास लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और जो हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फॉर अ बैंक? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंक? Write names of the quantitative methods of monetary policy. What do you know, but what do you mean by open market operation with reference to monetary policy? List down the contents of a checkbook. What are the important sources of bank funds? And what is meant by crossing of check? What define bank draft? तो ये आपके पास यहाँ तक थे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन है, What are credit control measures of central bank? ये लॉन्ग क्वेश्चन पहला है। Differentiate between bill of exchange and promissory note in detail. Discuss exchange control and also explain different methods of exchange control. Discuss in detail the functions of central bank. Differentiate between bill of exchange and promissory note. उसके बाद है define exchange rate, explain kinds of exchange rate, also write down causes of exchange in the exchange rate. Describe various kinds of bank in detail. Explain the difference between central and commercial bank. Make comparison of different banks account, for example current, saving and fixed account. तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपके गेस्ट पेपर के तौर पर इंपॉर्टेंट हैं फॉर बैंकिंग। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? बैंकिंग और आईकॉम पार्ट 2। ठीक हो गया। तो आप बच्चों ने इनको लाजमी देख लेना है बिफोर योर पेपर, बिफोर एग्जाम, जब भी हो, तो ताकि आप लोगों के लिए एक आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।